Okay, so where we were? Acha, I gave this question. The cyclist on a curvical path. Did you try that? You, you forwarded me. Okay, I didn't have went through any of the messages. Almost 32 messages are pending in my WhatsApp to reply. Still, yeah, that's not only lot. Like, yeah, I don't means I'm not getting time to reply on the messages. Okay. Oh, there is something going on or what? Oh, okay, 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 no problem. Uh, huh? Okay, okay. So we'll start this by discussing this problem, by how to do it, and what are the different understanding of this kind of problems. Then we'll move ahead. Okay. So can you tell me what is your intuition regarding this problem? Can you just describe me what you tried? Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. 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 Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. 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 Okay. So what you okay? So basically, you found out the acceleration, and then you'll have to tell. Yeah, that is kind of a very good way, but still, like that acceleration is not going to tell us that which part is most dangerous. Okay. See, basically, if I, okay, so okay, so how to answer this question? That's the biggest thing. Okay. So first, we'll consider part A to part B. When I move from part A to part B, and when I move from D to B. Okay, A to B and B to D. Sorry, D to E. A to B and D to E. When we are discussing this, when we are trying to understand what will happen when I move from A to B and D to E, what is going to happen? You only say me. Like if I move from A to B, basically, if I can see the particular as I move way up and up and up and up, what will happen? If I see for the A to B part, so should I do the calculation? Okay, I'll make you understand. This is my A to B part, isn't it? This is A, this is B, and the cyclist is going over here. So consider this cyclist of mass m. Okay. Now, at that instant of time, if it is making some kind of angle theta with the vertical, okay. Let's suppose it's making some kind of angle theta. So once again, there will be two components, one mg. So mg cos theta and mg sin theta, isn't it? And this will be my normal, and this is going with constant velocity v. So along this side it is mg cos theta. If I write the normal equation, that will be what? Centrifugal force will be outside as usual, which is mv square by r. So n is equal to
mg cos theta minus mv square by r. Are you able to get me or not? Now, you know that basically friction is nothing but normal, sorry, mu into normal. Yes, so here friction, required friction, see, basically the required friction will be what? It will be mu into mg cos theta minus mv square by r, isn't it? Now, when I'm moving up ahead, means when I'm going like this way, the cos theta is decreasing or increasing? It's decreasing. So, sorry, theta is decreasing, but cos theta will increase or not? Yeah. So, so basically, as I'm moving upwards, this cos theta value is increasing. This term is increasing. So that means what? Does my friction is increasing as I move from A to B? Yes. So basically, what we conclude that in this particular region from A to B, the friction is increasing as I move upward. है ना? So if friction is increasing, that gave our answer that as I know that friction is increasing, simple and logical reason, as you move ahead, friction is helping you to go up ahead. Are you able to get me or not? So there will be no slipping. Are you able to get me? Because my friction is constantly increasing over there. Are you able to get me or not? Now, when I consider the concave path from D to E, once again same mass E, consider this as angle theta, this as mg, isn't it? And for that, this is angle theta, md cos theta, and once again I'll get the terms of normal and all those kind of terms. So this direction will be my direction of normal, isn't it? That's my direction of normal over here. Now, again centrifugal force will be outside, so this is mv square by r. Yes, so normal from D to E is basically mg cos theta plus mv square. Are you able to get me or not? Understood? So basically, once again, my required friction is what? Mu into L, isn't it? My required friction will be mu into N. So if I just consider that particular required friction, if I just take that particular case of required friction, what will happen? I can write this as from D to E. When I'm considering D to E, basically this part is like this way located over here. Okay. Okay. So for this case, for this cyclist of mass M, normal is equal to mg cos theta plus mv square by r. And as it moved ahead, in Dubai, there are really gangsters. So friction is once again mu into n. But that will be how much? Mu into mg cos theta plus mv square by r. Are you able to get me or not? But look over here. When I see this, when I just try to understand, for this mass m is going upwards or not? Mass m is going upwards. Direction of velocity is towards this side. So downside, what it is experiencing? Mg sine alpha, mg sine theta plus friction. Are you able to get me or not? So what do you observe? Basically, when it is going from D to E, although the particular theta is increasing, what is happening? Theta is increasing. So cos theta basically will decrease. Cos theta is going to decrease. But as it is decreasing, this value, this particular value of mg cos theta is definitely going to decrease, but there will be no that much significant decrease now. Uh, I'll tell you. See,
what is happening basically when it is going upwards? Already there is an mg sine theta component working in backward direction or not? So when it is going upwards, the value of theta is increasing. So this component is increasing basically. So if it is increasing and this component mg cos theta is decreasing, now you know that what will happen as the friction is working also in backward direction only. So basically, I can add with the mg sin theta plus the friction as a backward force or not. So definitely, what will happen when the person will go upwards, as the downward force is already balancing because this mg cos theta decrease is balanced by the mg sin theta increase or not. Look over there. Mg cos theta is decreasing, but mg sin theta is increasing or not. So in downward direction, if I add both the friction, this friction plus mg sin theta, the means the amount of decrease this what it is bringing will be, see, basically the downward force is how much? It is mg sin theta mu mg cos theta plus mu mv square by r or not. So if I look into this, what is happening? As I'm moving forward, sine theta is increasing, but this term, mg cos theta is, are you able to get me or not? But sine theta is increasing or not? So this increase in the term can definitely balance this decrease or not by some significant amount. Not only by significant amount, हाँ, बैलेंस नहीं मतलब ऑलमोस्ट वो सिमिलर लाने की, मतलब अगर मान लो तुम एक वैल्यू मान लो, अगर मैंने 2 + 2 लिखा, ठीक है, अब मैंने 2 में से जस्ट 0.5 घटाया और यहाँ पे अगर 0.7 बढ़ जाएगा तो बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट बराबर हुआ या नहीं हुआ? तो वही चीज, हाँ, तो वही चीज वो बोल रहा है कि बराबर हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर देखो हमें पूछ रहा है कि मोस्ट डेंजरस पाथ कौन सा है, ठीक है, हम बराबर नहीं कर रहे हैं, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बॉडी तब ना स्लिप करना स्टार्ट करेगी जब यहाँ पे फ्रिक्शन फील नहीं होगा, बैकवर्ड फोर्स फील नहीं होगा, क्योंकि आगे की वेलोसिटी क्या है, v है कि नहीं? तो डेंजरस पाथ कब कहलाएगा? जब वहां पे फ्रिक्शन घटने लगेगा। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? फ्रिक्शन इन द सेंस अपोजिंग फोर्स घटने लगेगा। आर यू एबल टू गेट मी? So basically over here, what is happening? As the person is moving upward, this friction is a little bit decreasing, but it is not that much significant enough to decrease it in a much more greater sense. Are you able to get me or not? So that is why this part is also going to be covered conveniently. Are you able to get me? अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, इस अपवर्ड रीजन पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो वेलोसिटी आगे की ओर ऊपर जा रही है, बॉडी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन पीछे की ओर है ना, फ्रिक्शन पीछे की ओर है। सो अब ध्यान से देखूंगा अगर मैं, तो जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ेगा डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, देखो फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा लेकिन साइन थीटा डिक्रीज कर रहा है ना, थीटा इज बेसिकली डिक्रीजिंग, सो साइन थीटा इज डिक्रीजिंग। सो इसके वजह से ये आराम से पीछे की फोर्स एक तरह से बैलेंस हो जा रही है, जो बॉडी को क्या प्रोवाइड करेगा, आगे बढ़ने के लिए एक इक्विवेलेंट फोर्स प्रोवाइड करेगा। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक है, मतलब ऐसा हो, देखो हमें इमेजिन करना है कि स्लिपिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे स्लिपिंग होने के चांसेस कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा फोर्सेस अवेलेबल है जो हमारे बॉडी को आराम से आगे मूव करा सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर तुम कोई कर्विकल पाथ पे चलते हो तो क्या चांस रहता है कि तुम वहां पे स्लिप कर जाओगे, है कि नहीं? लेकिन तुम्हारे पास स्लिप होने के लिए क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन कम हो जाना चाहिए वहां पे, बहुत कम, नेगलेस, यस, मतलब फ्रिक्शन इतनी कम हो जानी चाहिए कि ताकि तुम स्लिप कर जाओ, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो तुम कभी देखे हो क्या कोई बॉडी ऊपर चढ़ रही है और स्लिप हो जाए? नहीं ना, हुआ, ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये जो ए टू बी है और डी टू ई पार्ट है, उसमें क्या हो रहा है कि डाउनवर्ड फोर्सेस ऑलमोस्ट बैलेंस हो जा रहे हैं, जिसके वजह से मतलब डाउनवर्ड फोर्स के अंदर ये जो इंक्रीज और डिक्रीज है ऑलमोस्ट बैलेंस स्टेट में, उसके वजह से बॉडी क्या करेगी, आराम से क्लाइंब अप, क्या इन दोनों केसेस में ए टू बी में क्लाइंब अप कर जाएगी और डी टू ई में भी क्लाइंब अप कर जाएगी। आर एबल टू गेट मी और नॉट?
मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? Is this clear? But you can imagine it perfectly when I will draw the B to C and C to D part. Okay, so when I consider B to C part, okay, अब मैं अच्छे से कंपैरिजन दिखाऊंगा, ठीक है? ध्यान से देखना, ठीक? 1 minute, let me draw it perfectly. So when I compare B to C, so B to C is like this way, isn't it? 1 minute, let me draw it. Perfect. Okay, this is B to C part, and this is C to D part, isn't it? Now, if I look into these two tracks and then I want to draw the normals and all, you see what you will observe. Okay, look into that. C to D. Now, let's suppose this is my mass m. ठीक, बॉडी की वेलोसिटी कहाँ है? आगे, है ना? अब ध्यान से देखो, तो ये एंगल थीटा हो गया इसका. आर एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक. Can you draw the all the components? Just draw all the component of normal and centrifugal forces right now. Did you have drawn? तो ध्यान से देखो, this will be my normal or not? This will be mg. This will be the direction of mg cos theta, and I'll draw it a little bit bigger. Mg cos theta. This is the direction of mg sin theta. तो ध्यान से देखो, तो basically the friction will be present. The friction is going to be present in this particular direction, opposite direction. Friction will be present in opposite direction. Now, actually, in this path, the required friction so that it should not slip is how much? Mg sin theta only. See, I need a constant. I need a constant velocity. How that will be constant if downward force balances my upward force all around? Yes, are you able to get me? So required friction is how much? Mg sin theta. But my normal over here is how much? The centrifugal force will be outside. Once again, mv square by r minus mv square by r. Are you able to get me or not? So now you see that required friction is mg sin theta, but try to understand. I'll tell you. I'll write this later. But my f max value over here is how much? That will be mu into n or not? Maximum frictional force is what? Mu into n. So that will be how much? Mu into mg cos theta minus mv square by r. Are you able to get me or not? Similarly, do this part. Wait for the conclusion. No, no, we'll come on that. Wait. We'll come on that. Now, consider once again the mass m to be present over here. Once again, mg downwards. This angle is theta right now. Okay. So, this will be once again mg cos theta, and this will be the direction of mg sin theta, isn't it? The direction of velocity is towards this side only. This will be my direction of normal. So friction will once again act in which direction? Opposite direction. While, yeah, and mv square by r will act in which direction? This direction. Are you able to get me or not? So once again, normal. This time normal is what? Mg cos theta plus mv square by r. Are you able to get me? Isn't it? Now, n is equal to mg cos theta plus mv square by r. Now, if I see my frictional, means required friction. So, required friction is basically how much? It's exactly equal to mg sin theta. But once again, my f max value over here is how much?
mu into n, which is mu into mg cos theta plus mv square by r. Is this clear? Digest it till this point, then I'll move ahead. Any kind of doubt? तो ध्यान से देखो होगा क्या, अब हो क्या रहा है. When I move from B to C, theta is increasing or decreasing? हाँ. Once again think. Once again you think. If I move from B to C, theta is increasing or decreasing? It's increasing, yes. So if it is increasing, what will happen with the normal? Cos theta value will decrease. Sin theta value will. Are you able to get me or not? So simple सी बात है नहीं. Wait. I'll come on that. Just think of the particular answers over here. So here normal is decreasing, but as sin theta is increasing, that means required friction is increasing. Required friction is increasing, isn't it? Acha, if normal decreases, does the value of f max is always decreasing or not? And C at point C, as the normal value is decreasing, f max as the normal value is decreasing, f max value is also decreasing or not? Correct. So what is happening basically? Can you visualize right now that, sir, if I move from B to C, my required friction, whatever the friction is required, is basically increasing, but my F max value is decreasing. Are you able to get me or not? Now, if F max value goes on decreasing, you see at the point C, theta becomes 90, this cos theta becomes how much? 0. Friction becomes negative or not? F max becomes what? Negative. So if I move from B to C, my required, the friction required to be present on that road is going to increase, but the support of the maximum friction which can be provided by the road is basically decreasing. So which point will be dangerous? Point C or point B? Again, I'm saying you one thing. एक बात बताओ, चलने के लिए तुम्हें रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की जरूरत है. चलने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी ना. पड़ेगी. और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है. क्या होते जा रहा? लेकिन जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो रोड प्रोवाइड कर सकता है वो क्या हो रहा है? घट रहा है. तो तुम स्लिप करोगे या वहां पे खड़े रहोगे? स्लिप करोगे. तो अगर तुम्हारा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रही है, तुम उसको मैक्सिमली सपोर्ट बहुत ही कम कर पा रहे हो, तो फिर क्या होगा? स्लिपिंग होगा या नहीं होगा? I am saying one thing, just one or two things. I am saying that required friction to walk is increasing, है ना? But the max friction supported is decreasing, है ना? तो इस ये कंडीशन तुम्हें क्या बता रहा है? इसका मतलब कंक्लूजन बताओ. तुम पहले खुद से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा. तुम इसका मतलब क्या समझ रहे हो? बताओ. I am not asking about kinetic or static. I'm just taking into consideration that, just think about the particular situation of friction. Think. I'll torture you today, basically. ध्यान से देखो, इधर देखो. अगर मान लो एक पर्सन है, ठीक है, वो चलना चाह रहा है ना, he wants to go.
The basic friction, the friction which is provided by the road is basically what is maximally it can be 10 newtons. Maximally it can be what? 10 newtons. Okay. Now he went on to a road which is like this way. Okay. And there is oil also which is present over here. What is present? Oil. So if the person comes over here, due to the oil, the coefficient of friction will reduce or not? And the maximum friction which can be provided by the road can be how much? Let's suppose uh, due to oil it will sufficiently reduce, and इसके वजह से जो फ्रिक्शन बच जाता है वो क्या कितना हो जा रहा है? सिर्फ 5 न्यूटन। कितने का है? कितने का है? Due to oil, the maximum friction which can be provided by the road is how much? 5. Here it was how much? Due to the roughness of the road, it was 10 Newton. Are you able to get me or not? Now, here as the person was walking straight, इसकी गिरने की कंडीशन है क्या? नहीं ना, ये तो सीधा चलते जा सकता है ना, ये चलते जा सकता है। लेकिन जब ये इस तरह से इंक्लाइंड रोड पे आएगा, जब ये पर्सन पर्टिकुलरली इंक्लाइंड रोड पे आएगा तो क्या होगा? क्या इसको ड्यू टू द इंक्लाइनेशन इसको एक्स्ट्रा फ्रिक्शन की जरूरत होगी या नहीं होगी? Basically friction required will be more or not? Yes. So whatever the friction he was requiring it over here, which was 10 Newton to walk, basically it will increase or not due to the inclination. But due to the oil, friction is what? Decreasing. तो पर्सन स्लिप करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। अब बात मेरी समझ में आई कि द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, इफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज मोर देन, basically more than f max, then what will happen? The person will definitely slip or not? मेरी बात समझ में? व्हाट इज द, हे मैन, इसका मतलब, इसका मतलब तुमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है? हम्म। एक बात बताओ, लुक ओवर हियर, लुक ओवर हियर, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन एंड मैक्स फ्रिक्शन। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इंक्लाइंड रोड है and if this is angle theta and a block of mass m is made to slide on this rough surface, ठीक है, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितनी है? mu, then the mg will be downwards. Yes, this is my direction of theta, this will be mg cos theta or not? And in this direction the mass m will have its one more component of mg, and that is how much? Mg sin theta. This is the direction of normal. Acha, you only tell me in the backward direction how much friction must be present so that the mass m will not slip. Is that true? Hmm? If I say friction to be present so that block moves with constant velocity, then how much will be my required friction? How much will be my friction? बताओ. Let's suppose this mass m will go down or not. It is going down. It will go down with some velocity v. F must be equal to how much? But maximum value of friction is what? Did you ever studied limiting friction, static friction, and kinetic friction? Then what is limiting friction? Ha ha ha. Tell me, if you go like this way, it's a very big problem. You have to tell me initially only that, sir, can you just
डिस्क्राइब फ्रिक्शन इन अ मच मोर ग्रेटर सेंस। अच्छा देखो, अभी एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ेंगे, है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर एक मान लो एक ब्लॉक ऑफ मास है, ठीक है ना, अब मान लो ब्लॉक ऑफ मास कितने केजी का है, मास लेट सपोज 5 केजी का ही ले लेते हैं, है ना। तो जो भी नॉर्मल होगा विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 5g और नॉट, ठीक। अब इस पर्टिकुलर सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन, क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन। तुमने इसके ऊपर लगाया एक फोर्स, ठीक है, तुम इसके ऊपर क्या लगाना स्टार्ट किए, फोर्स। तो मालूम नहीं है कि ये सरफेस कैसा है, ठीक है, बस इतना पता है कि द पर्टिकुलर ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव व्हेन द फोर्स अप्लाइड is 20 newtons. Block will start to move when the force applied is how much, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से सोचो जरा, अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन, तो क्या होगा, ब्लॉक मूव करेगा क्या, केस वन, अपन केस वन स्टडी करते हैं। केस वन बोला मैंने फोर्स अप्लाई किया कितने न्यूटन का, फोर्स अप्लाइड इज बेसिकली 5 न्यूटन, ठीक। ब्लॉक विल मूव और नॉट, it will not move. So you only tell me, if the block does not move, that means something is acting in backward direction. Yes. What is that value of friction then? If the, अगर मान लो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन म्यू, तो फ्रिक्शन क्या होगा बताओ जरा, म्यू इंटू 5g, ये म्यू इंटू 5g होना चाहिए, सोचो जरा। अभी मैंने तुमसे बोला ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। अभी पूरी फ्रिक्शन की तुम कॉन्सेप्ट रिलीज कर दो बेटा, फ्रिक्शन समझो अच्छे से। यहाँ पे क्या है, बॉडी मूव कर रही है क्या, नहीं, एक्सेलरेशन इसमें है ही नहीं, बॉडी स्लिप ही नहीं कर पा रही है। तो जो भी तुम अप्लाई करोगे फोर्स, इट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय अ बैकवर्ड फोर्स और नॉट, and that means the friction is taking which value, it is just taking 5 newtons, then only the net force will be zero and the body will not move or not. Are you able to get me or not? So is my friction is equal to mu into normal? No, friction is just taking the value of which force, applied force. Are you able to get me? And this force which is not, this friction which is exactly equal to the applied force and which is not making my body to move is going to be called as a static friction. So static friction has no formula, it is not equal to mu into n or something like that, okay. Static friction means, understand what is a static friction first. It is that particular friction which comes into play, which takes the exact applied value of force, applied value of force, but in opposite direction. And this is why it is called as a static friction, because it is that friction which is coming into play, which is taking the applied force value but in opposite direction, such that my body remains in rest. Are you able to get me or not? So does my static friction is equal to mu into n? No, static friction is exactly equal to the applied force but in opposite direction. Is this clear or not? So look over here. If I just apply the force of 10 Newton, does my body will move? If applied is how much? 10 this time. Body does not move. So static friction is equal to how much? Static friction is how much? 10. Are you able to get me or not? Is this clear or not? So basically this static friction which is appearing over here is called as also required friction. Understood? That this is the means that is the particular amount of friction which will be required to keep my body static. Understood? Now
इफ आई मूव अहेड, अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब इसी केस को अच्छे से समझो, मैं बहुत, ये सब जो चीजें हैं ना, मतलब दिस इज व्हाई आई लव फिजिक्स, मींस दिस इज व्हाई people come to understand physics to me, because mechanics is just a wonder thing for me. Now, once again, let's suppose this is 5 kg. Now, you were previously the force required to move was basically how much? 20 न्यूटन्स, है ना? फोर्स रिक्वायर्ड कितना था? 20 न्यूटन। जैसे ही अप्लाई करोगे बॉडी क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। क्या करेगा? मूव। ठीक। तो देखो, जब तक तुम 19 न्यूटन तक अप्लाई करोगे बॉडी मूव करेगी क्या? तो स्टैटिक फ्रिक्शन हर उस पर्टिकुलर फोर्स की वैल्यू को पिकअप करेगा या नहीं करेगा? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इज दिस क्लियर और नॉट? कि भाई सर सिंपल सी बात है, पूरे 3 फ्रिक्शन में से जो पहला फ्रिक्शन है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। वो उसका मतलब ही होता है कि वो बस मोशन को अपोज करेगा और वो पर्टिकुलर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को पिकअप करेगा, जब तक मेरा मूव करने के फोर्स से अप्लाइड फोर्स का। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? ठीक। तो देख, अगर मतलब मैंने, अब इस बार भी सरफेस रफ है, म्यू लगा हुआ है, नॉर्मल ये है, ये रहा तेरा एम जी, मान ले ये 5 जी है ना? ठीक है, अपन एम जी से डिनोट कर रहे हैं। अब इस बार जो तूने फोर्स अप्लाई किया वो एग्जैक्टली 20 न्यूटन अप्लाई किया। क्या कितना किया? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन नहीं, कम कर दो, हल्का सा कम कर दो, 19.999। ठीक। बॉडी मूव करेगी क्या? बॉडी मूव नहीं करेगी, लेकिन बॉडी के पास टेंडेंसी तो आ जाएगा ना मूव करने का। थोड़ा नहीं, पूरा का पूरा टेंडेंसी आएगा या नहीं आएगा? अगर तुमने इससे फर्दर डिक्रीज कर दिया अप्लाइड फोर्स तो बॉडी पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगी, अगर फर्दर हल्का सा इंक्रीज किया तो बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी? डिड यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? मैं बोल रहा हूं कि अगर तुमने जो अप्लाइड फोर्स है वो 19.99 से हल्का सा कम कर दिया तो बॉडी मूव करेगी क्या? अगर लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया तो बॉडी मूव करेगी क्या? कर जाएगी ना? तो दोनों सिनेरियो, इस पर्टिकुलर फोर्स इस पर्टिकुलर लिमिट पे आ रहा है या नहीं आ रहा? तो दिस इज व्हाई इस टाइम पे बॉडी देख, मतलब फ्रिक्शन, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि दो बॉडीज कभी भी आपस में मतलब वो कांटेक्ट को छोड़ना नहीं चाहते। बेसिकली फ्रिक्शन को बोला जाता है कांटेक्ट फोर्स। इसके पीछे की रीजन है कि जो सरफेसेस होती हैं किसी भी बॉडीज की, वो कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, अगर कोई दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, मान लो सरफेस ये ए है, तो उसकी जो डाउनवर्ड सरफेस होगी इस तरह से होगी, और जो सरफेस बी है उसकी भी डाउनवर्ड सरफेस कैसी होगी? ऐसी होगी। अभी दोनों एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए, ठीक है ना? अब जैसे ही तूने एकदम ये सबसे लास्ट लिमिटिंग फोर्स लगाया ना, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों की जो क्रेस्ट एंड ट्रफ है वो ऑलमोस्ट क्या कर जाती है? कॉन्साइड कर जाती है। क्या कर जाती है? टच कर रही होती है। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? पहले कैसा रहता है? इसके पहले दोनों की जो कॉन्टैक्ट सरफेसेस है वो आपस में एक दूसरे के अंदर बैठा रहता है, ठीक है, इस तरह से। अभी कैसा है? अभी एकदम लिमिटिंग बैरियर पे है ना, कि अगर थोड़ा सा फोर्स दिया तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा फोर्स कम कर दिया तो फिर से ये इस कंडीशन में जाएगा या नहीं जाएगा रिटर्न बैक? आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? तो बेसिकली इस पॉइंट पे, इस टाइम पे, ये जो दोनों सरफेसेस होंगे वो ट्राई करेंगे कि बॉडी मोशन में ना आए। मोमेंट ऑफ तुम्हारा जो इनर्शिया है वो काम करने लगेगा या नहीं करेगा? दैट एवरीबॉडी वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड एवरीबॉडी वांट्स टू रिमेन इन मोशन until and unless external force is applied. Are you able to get me or not? तो बॉडी की टेंडेंसी क्या है? रेस्ट में रहने की। लेकिन तुम कैसा फोर्स अप्लाई कर रहे हो? ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहे हो जो उसको मोशन में लाने के लिए एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा? तो क्या मेरा उस टाइम पे जो बैकवर्ड फोर्स लगेगा वो बेसिकली मैक्सिमम बैकवर्ड फोर्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? बोल रहा हूँ वो समझो जरा, मैंने क्या बोला कि सिंपल सी बात है, ये एक ऐसी फोर्स है, ये एक ऐसी अप्लाइड फोर्स है जिस पॉइंट पे बॉडी के पास बोथ टेंडेंसी है, द टेंडेंसी, बोथ टेंडेंसी इज अवेलेबल। मैं लिख दे रहा हूँ।
बोथ टेंडेंसी, तुमने इसके पहले फिजिक्स की ट्यूशंस ली थी क्या या नहीं? उन्होंने पढ़ाया था ये सब? ऐसा नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दिया था? बोथ टेंडेंसी इज अवेलेबल ऑफ रेस्ट एंड मोशन। मतलब ये जो अप्लाइड फोर्स है वो एक ऐसा अप्लाइड फोर्स है जिसमें बॉडी के पास कंडीशन है कि हाँ मैं रेस्ट में भी रह सकता हूँ, हाँ मैं मोशन में भी जा सकता हूँ। अगर तूने फोर्स बढ़ा दी ज्यादा तो मैं चला जाऊंगा मोशन में, अगर तूने फोर्स कम कर दी तो मैं कहाँ चला जाऊंगा, फिर से वंस अगेन रेस्ट कंडीशन में। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? लेकिन इस टाइम पे, इस इंस्टेंट में बॉडी, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस जो कांटेक्ट में है, सरफेस बोलता है चच्चा मेरे को मूव मत कराओ। सरफेस क्या बोल रहा है? डू नॉट चेंज द रेस्ट कंडीशन, डू नॉट चेंज द रेस्ट कंडीशन। लेकिन तुम्हें तो मालूम है ना कि अगर मैंने फोर्स बढ़ा दिया तो मोशन में आ जाएगा। सरफेस क्या बोल रहा है? लेकिन तुम मोशन में जा नहीं सकते बेटा, तुम्हें रेस्ट पे ही रहना पड़ेगा। तो जब सरफेस बोल रहा है रेस्ट पे रहने के लिए और तुम फोर्स कर रहे हो उसको मोशन में लाने के लिए, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उस टाइम पे सरफेस के द्वारा, दैट फ्रिक्शन विल बी माय मैक्सिमम फ्रिक्शन और नॉट। व्हाट? I'll kill you. Simple. See, once again I'm saying you, the body wants the you are applying such a force which is making the body to go into motion. Okay, it's not in motion, the body is trying to go into motion. हर अप्लाइड फोर्स का काम ही है एक्सेलरेशन को जनरेट करना ना, है ना? तो जो अप्लाई, इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स द बॉडी विल ट्राई टू गो इन मोशन, बट सरफेस इज सेइंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो इन मोशन। मतलब तुमको जैसे मान लो मैं मतलब मेरी, मान लीजिए ये मेरे पापा मम्मी का घर है, ठीक है? नहीं नहीं, दोस्त का घर, दोस्त का एग्जांपल सही होगा, है ना? मान ले ये मेरे दोस्त का घर है, ठीक, और ये मेरी मतलब जो भी एक्स गर्लफ्रेंड, इससे तुरंत फाइट हुई थी, उसका घर है ना? बीच में मैं हूं खड़ा। अब देख, अब कंडीशन क्या है? फाइट के बाद मैं सोच रहा हूं मतलब दोबारा वापस जाने के लिए अपने एक्स गर्लफ्रेंड के पास, है ना? लेकिन मेरा जो दोस्त है वो बोल रहा है कि नहीं तू जा नहीं सकता, तू जा नहीं सकता, क्योंकि वो फिर से तेरे को ब्रेकअप देगी और तू फिर से पीछे आएगा, है ना? Are you able to get me or not? So he is pulling me from backwards or not? But I am trying to go away from him or not? So he will he will try to means एकदम मैक्सिमम वे में अपना ट्राई करेगा ना। अबे ये वो ऐसी है तैसी करके मेरे को रोकने का कोशिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा। तो उस समय जो अपोजिंग फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमली वो ट्राई कर रहा है या नहीं कर रहा? लेवल बेस्ड, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी तो बेटा सरफेस वही कर रहा है ना, कि बॉडी ट्राई कर रही है कि मोशन में आ जाए, ट्राइंग टू मूव, लेकिन सरफेस क्या कर रहा है? बोल रहा है यू आर नॉट गोइंग टू मूव। तो उस टाइम पे जो भी फ्रिक्शन, जो भी वो अपोज करने के लिए फोर्स लगाएगा, बेसिकली फ्रिक्शन का मतलब होता है अपोजिंग फोर्स, और कुछ मत समझो, फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? अपोजिंग फोर्स। तो वो जो फ्रिक्शन लगेगा उस टाइम पे कैसा फ्रिक्शन लगेगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा। कैसा? और इसी मैक्सिमम फ्रिक्शन को बोलते हैं अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? इस कॉन्सेप्ट को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? ठीक, तो सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं सोचना है इसमें। अगर सर फ्रिक्शन देते हैं तो फ्रिक्शन में अपन के पास पहला दो केस आया कि अगर इस मास एम को मूव कराना है तो हमें कुछ ना कुछ एक अप्लाइड, कुछ ना फोर्स अप्लाई करेंगे जो बॉडी को मूव कराएगा। लेकिन अगर ये फोर्स की वैल्यू अप्लाइड मतलब मूव कराने वाली फोर्स से कम है तो क्या हो जाएगा? पीछे जो फ्रिक्शन, जो बॉडी अपोज करेगा उस मोशन को, और वो जो फोर्स लगाएगा उस टाइम पे, वो कितना फोर्स लगेगा? बेसिकली दैट फोर्स विल बी सिमिलर टू द अप्लाइड फोर्स, और इसी फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स।
लेकिन अगर मैंने एकदम एकदम ऐसा फोर्स अप्लाई किया जो बॉडी की टेंडेंसी मीन्स इट ब्रॉट द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मूव, ठीक है ना, तो वहां पे surface will apply a maximum friction and that will be present in opposite direction, which will try that body should once again come to rest because initially it was at rest. And that maximum friction we call it as limiting friction, और इस maximum friction की ही value होती है mu into n. And since the body is at rest, so this is why this mu is called as mu static into normal है. Are you able to get me or not? और इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की भी जो वैल्यू होती है वो म्यू एस इंटू एन होती है. नहीं, म्यू एस इंटू एन सिर्फ और सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है. आर यू एबल टू गेट मी? ठीक है, इसको लिख लेते हैं तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन, है ना. आर यू एबल टू गेट मी? Okay, write this and then I'll move ahead. Okay. Okay, so now you got the idea of what is the static friction and maximum friction. What is the static? It will take the value of what is maximum. Define. बोलो, मतलब बोलो maximum limiting friction है क्या? Can you define limiting friction by yourself now? That will be present when the body is in the tendency to move, but is still not moving. Are you able to get me or not? ठीक, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक. अब इसके बाद आता है असली कॉन्सेप्ट कि जब तूने अब फ्रिक्शन को बढ़ा दिया, अब मतलब अप्लाइड फोर्स को 20 न्यूटन से ज्यादा कर दिया. इफ योर अप्लाइड फोर्स इज 20 और मोर देन 20, व्हाट विल हैपन? द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग. यस, है ना. तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. एक बात बताओ, एक कार चल रही है, ठीक है. तुमने कार के इंजन को ऑफ कर दिया, गाड़ी कुछ देर चलने के बाद रुकेगी क्या? The car will stop after some time or not? Then what is acting in the tires? Simple सी बात है. If I'm moving and then you stop, if I have a car and you stop the engine, how does that car stops? It stops. So उसको stop करने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ी? ऐसा क्या चीज उसको रोका? There will be something uh, which will restrict the particular body to move or not if the engine is not there. वो वहां पे क्या प्रेजेंट है फिर? What thing is making the car to stop? Friction. Simple सी बात है. That means when the body is moving on any kind of surface or any kind of rough surface, friction will never ever become zero. Are you able to get me or not? So if F applied is more, basically तुम खुद सोचो कि अगर मेरे को बॉडी को मूव कराना है तो क्या मेरा F applied should be greater than F max? Of course, isn't it? That if basically this 20 Newton is the meaning that our maximum friction means our maximum friction is also the value of how much? 20 Newton. Because after 20 Newton is the body means the body is able to move only now. Right? So basically if I want to move, the applied friction must be greater than F max. And if applied is greater than F max, then what will happen? The body will start accelerating, but the friction still never ever becomes zero. Are you able to get me or not? So at that instant of time, what we say, since the body is moving on top of each other, the friction present over there is called as kinetic friction, and it is totally different from static and totally different from F max. Are you able to get me or not?
हाँ हाँ हाँ. No, no, nothing like that. No. If I told you right now that, see, do not treat that they all are similar. F max is totally different from F static. F kinetic is totally different from F max and F static. Are you able to get me or not? What I'm saying is simple. कि देख, अगर तेरे मास को मूव कराने के लिए 50 न्यूटन की जरूरत थी, ठीक, तूने अप्लाई कर दिया 51 न्यूटन, तो बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी. But still there will be some friction which will be present in opposite direction. Yes, and then that friction is going to be called as kinetic friction. Stop it till now. After that I'll make you understand. Okay. तो उस जो फ्रिक्शन उस टाइम पे प्रेजेंट है उसका नाम क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन. अब एक बात बताओ, जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कैसा होना चाहिए? It will never ever be similar with the static friction that I know. Are you able to get me or not? But is this kinetic friction will be similar with F max? Is it going to be similar with F max? Really? Hmm? ध्यान से देखो. Understand this. Can you tell me what is mu? First of all, it is called as coefficient of resistivity, coefficient of friction. Basically, to understand in greater sense, it talks about how the two bodies are overlapping on each other. Okay, ओवरलैपिंग कंडीशन. ठीक है. अगर मान लो, सिंपल सी बात है, अगर मैं चला गया, लेट सपोज इफ आई एम वॉकिंग ऑन अ रफ रोड, द म्यू विल बी मोर. इफ आई एम वॉकिंग ऑन अ प्लास्टर्ड रोड, द म्यू विल बी लेस. सिंपल एंड लॉजिकल, इजंट इट? तो ध्यान से देखो, बेसिकली अगर मैं दो बॉडीज को ओवरलैप करा रहा हूं, ठीक है, ठीक, तो दिस इज द कंडीशन, दिस इज दैट पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ what we can say limiting friction, where the body has or body is trying to move on top of each other. Okay, this is just trying to accelerate. Okay, but when it is moving on top of each other, basically this overlapping will be perfectly too much less or not? Yes. Are you able to get me? So this is A, this is B. Overlapping decreases when the two body has a relative velocity between them, isn't it? So basically, here the mu, if I consider mu, this is mu of static and this is the mu of kinetic. So you only tell me where, which one will be bigger? Mu s should be bigger than mu k or not? That should be the case. Mu s will be less than, sorry, greater than or equal to mu. Not, you can consider it, so it is not equal to it. Sometimes it can be equal in too much rough surfaces. Are you able to get me or not? Yes, so mu s will be always greater than mu k. So that means, इसका मतलब समझ में आया कि जो भी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, उस टाइम पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में जो पहले वाला जो फ्रिक्शन था एफ मैक्स में, कौन सा लग रहा है? म्यू एस लग रहा है ना, क्योंकि बॉडी कैसा है? रेस्ट पे. लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो चेंज हो जा रहा है, नहीं चेंज हो जा रहा? तो बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, basically less than F max or not, बोल है ना? But it will be definitely, it can be or cannot be also greater than F static. Are you able to get me? I will come on that. Wait, right now. Did you understood till now that F kinetic is less than F max? Are you able to get me or not? ठीक. अब एक बात बताओ, अगर एक कार है और एक ट्रक है, मैंने इंजन बंद कर दिया, कौन सा चीज पहले रुकेगा? ट्रक रुक जाएगा. इसका मतलब जिसका जिसका बेसिकली वेट ज्यादा होगा वो पहले रुक रहा है ना जी. तो वो मूविंग कंडीशन पे है ना, तो इसका मतलब वंस अगेन द काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन माय वेट व्हिच इज मेजर्ड बाय माय नॉर्मल और नॉट.
So that is why F kinetic is written as mu k into normal. Are you able to get me or not? But this thing will be definitely less than F max, which is mu s into normal. Are you able to get me or not? Understood three frictions: static, limiting, and kinetic. Okay, so these are all the different cases. These are all the different cases. Mu s will never ever appear if the body is in moving condition. Okay, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज एन वेरिएबल फ्रिक्शन while limiting friction is the fixed friction and kinetic friction is also constant friction? Are you able to get me or not? Because normal is never ever going to change. Yes, so if I draw the diagram of the friction with respect to applied force, what will happen? You see this. This is what your teachers would have drawn, but they would have not made you understand. And that's why I hate the teachers. What will happen? You know that as I'm increasing the F applied and the body is not moving, static friction is going on increasing constantly with the same value of F applied. So that will be a linear graph or not? Then there reaches a barrier condition, isn't it? Where the friction becomes maximum, isn't it? Due to the applied force. Are you able to get me? Okay. Why it is a curve I have drawn? Because it is not linear right now. How much you are applying the friction, it is only taking the maximum value. Okay. And then after that, as the applied force little bit increases with the F max, what will happen? This barrier will once again break and the body starts to move with a constant friction, which we call it as F kinetic. This is F apply F static. I'll explain it, and this is the reason of F limiting. एक बात बताओ, अभी तो तुम्हें समझाया ना कि जो फ्रिक्शन स्टैटिक होती है वो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा? ठीक है, टिल सम लिमिट ओनली ना. Till that range it has no tendency of moving, but when that tendency appears you have a limiting friction over there or not, or you can say that is a particular barrier or not. तो वहां पे जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा? वो तो नॉन लिनियर ग्राफ हो जाएगा ना, है ना? तो इसीलिए मैंने कर्व ड्रॉ किया है ना. उसके बाद एफ लिमिटिंग के बाद जैसे ही तुम फोर्स जरा सा बढ़ा रहे हो तो बॉडी क्या करने लग जा रहा है? मूव कर रहा है ना, मूव करने लग रहा है. बट जब मूव किया तो उस समय जो फ्रिक्शन प्रेजेंट आया वो कौन सी फ्रिक्शन है? म्यू एफ काइनेटिक, जिसकी वैल्यू क्या है? म्यू के इंटू नॉर्मल है. यस, लेकिन जैसे ही मूव किया मालूम चला कि म्यू के इज बेसिकली लेस देन म्यू एस और नॉट. सो कैन आई से दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन एफ मैक्स? ऑफ कोर्स, एंड इट इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन और नॉट. So that is why the graph with the F applied of the kinetic friction is a constant graph over here. Are you able to get me or not? Understood. But you see that F kinetic is basically more than F static. Only at one point it is becoming similar. Are you able to get me? Almost similar. Okay. Why? Because see, F static can take any value till the body is at rest, but F kinetic is always going to be mu k into normal. Okay. So mu k into normal will be always maximum than F static. Look over there. See this. When I have a body of mass 5 kg, mg, if I just take, let's suppose if I take mu k is very, very less basically. You can consider it to be 0.2. Okay. So if this is so I can calculate kinetic friction. It will be how much? 0.2 into 5 into 10. How much is that? Almost 5 newton. So basically if I apply a force of less than 5 newton, all those value will be taken by static friction or not. So that is why I can, sorry, 1 minute, there is undo. ah. So that is why I can consider that F kinetic can be more or cannot be more than F static. Are you able to get me? मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या पूरी की पूरी? अंडरस्टूड. अब से कोई डिफिकल्टी होगी फ्रिक्शन में? नहीं ना?
ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर बॉडी को कॉन्स्टेंटली यहाँ पे मूव करना है तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज हाउ मच, एम जी साइन थीटा। लेकिन एफ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू नॉर्मल होगी ना। तो म्यू इंटू नॉर्मल होगा क्या, म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? And this required friction is always basically less than F max or not. Are you able to get me or not? तो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? When this required friction becomes more than F max, the body will start slipping. क्या करने लगेगा body? Slip करने लगेगा. Are you able to get me or not? And that's what I made you understand using that oil example. कि देख यहाँ पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो 10 है, यहाँ पर आते आते इंक्लाइन प्लेन पे एफ मैक्स की वैल्यू हो गई क्या, 5 न्यूटन। सो बेसिकली हुआ क्या कि एज द बॉडी इज गोइंग डाउन, इसके लिए जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या हो गई, बढ़ गई है, क्योंकि इंक्लाइनेशन ऑलरेडी है ना। तो बॉडी को ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, पैर को ज्यादा टिका के रखना पड़ेगा, है ना। लेकिन वहां पे हमें क्या दिखाई पड़ रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो रोड अप्लाई कर सकता है वो खुद पे खुद क्या हो गया, डिक्रीज। कैसा हो गया, डिक्रीज। तो जो अपन का जो ऑब्जेक्ट है वो रोड से फ्रिक्शन ग्रैस्प नहीं कर पाएगा ना, तो बॉडी क्या कर जाएगा, स्लिप। आर एबल टू गेट मी और नॉट? करेगा। तो दैट इज व्हाट आई सेड, दैट रिक्वायर्ड फ्रिक्शन टू वॉक इज इंक्रीजिंग बट द फ्रिक्शन, मैक्स फ्रिक्शन सपोर्टेड इज डिक्रीजिंग, दैट मींस दिस इज अ कंडीशन ऑफ स्लिपिंग। मेरी बात समझ में आई या नहीं है? आर एबल टू डाइजेस्ट दैट टोटली? ठीक। तो ध्यान से देख, बेसिकली इफ आई गो फ्रॉम बी टू सी रीजन, my requirement of the friction is just mg sin theta, but the maximum friction supported is mu mg cos theta minus mb square by. When I go from b to c, theta is increasing and normal is decreasing. So when theta increases, simple and logical reason, basically maximum friction is decreasing, okay, but what is increasing is required friction. तो बॉडी स्लिप करेगी ना बेटा, करेगी ना। अभी बात समझ में आया? तो बॉडी स्लिप करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट बी सबसे ज्यादा हाईली डेंजरस पॉइंट है या सी सबसे ज्यादा डेंजरस पॉइंट है? बी कैसे डेंजरस पॉइंट हो गया, हम बी से आ रहे हैं तब तो मेरा फ्रिक्शन डिक्रीज हो रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। और सी पे देखो तो सी पे नेगेटिव हो जा रहा है ना, माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर। तो दिस इंप्लाइज सी इज माई मोस्ट डेंजरस पॉइंट ना। आर एबल टू गेट मी? Why? Because the required friction is maximum at point C, while the maximum friction provided is minimum at point C. देख तो ध्यान से, where the value of this F max will be less at point B or C, will be less at C. Required friction will be maximum at B or C, ध्यान से देखो, इधर देखो, इधर देखो। Why you are not using your mathematics today? You are good at mathematics. Why you are not using a little bit of logic today? You know, ध्यान से देख, if I just look at point B and look at point C, what will happen if this is my theta? Basically, at point B, the value of theta is how much? 0 degree. At point C, the value of theta is how much? 90. So, F max is mu mg cos theta minus mv square by r, while F required is how much? Mg sin, where the sin theta value will be 0. When at what angle sin theta is 0? At theta is equal to 0 now. So required friction is basically 0 over here or not at point B. But it is maximum at point C or not?
Are you able to get me or not? If I see F means maximum friction, cos theta value is maximum at 0 degree while minimum at point C or not. So F max is maximum over here already, while the F max is minimum at the point C or not. So where is my most dangerous point? Where the required friction is maximum and maximum friction that can be provided is minimum or not? तो कौन सा point सबसे dangerous point हो? When the body is climbing down from point B to point C. Are you able to get me or not? Understood? लिख ले इसको. हम्म. ठीक है. Now, similarly, explain the reason from point C to D. What will happen? Which point is dangerous, C or D? Yeah, when I'm moving from point C to D. Okay. Mm-hmm. Theta is from C to D, theta is decreasing. As I move from here to here, theta is decreasing. So normal will increase and required friction. सोच जरा sin theta decreases or increases when theta decreases. So required friction will. So what is happening? Required friction is decreasing while F max is increasing or not. So does my road is supporting when I am moving from C to D or not? So that means which point is dangerous in point C and D? At D, I'll experience a maximum friction. At point C, I'll experience a minimum friction, isn't it? Basically, C is once again dangerous. Understood? So out of this whole track, which point is most dangerous? Which point is most dangerous? C. Neither B, neither D, neither E, or neither A. Which point is dangerous? C. But then the question arises now that इसमें क्या पूछा है कि the most dangerous path. So where I have the more tendency to slide before the point C or just after point C, that is also need to be calculated now. Yes. So look over there where you only tell me कहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन सबसे ज्यादा स्लिपिंग की चांसेस है जस्ट बिफोर सी और जस्ट आफ्टर सी बोलो. अच्छा ध्यान से देखो जस्ट बिफोर सी में जो नॉर्मल है वो एम जी कॉस थीटा माइनस एम बी स्क्वायर है. जस्ट आफ्टर सी में जो नॉर्मल है वो क्या है एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर है ना. और जैसे ही नॉर्मल डिग्रीज जहां पे नॉर्मल कम होगा वहीं पे तो स्लिपिंग सबसे ज्यादा होगी ना बेटा. जहां पे नॉर्मल कम वहां पे फ्रिक्शन कम तो वहां कहां पे स्लिपिंग ज्यादा होगी जहां पे फ्रिक्शन कम हो. आर एबल टू गेट मी और नॉट. तो जस्ट बिफोर सी फ्रिक्शन कैसा है बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जस्ट आफ्टर सी बिकॉज नॉर्मल जस्ट बिफोर सी इज एम जी cos थीटा माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर वाइल जस्ट आफ्टर सी इज एम बी स्क्वायर प्लस आर. ध्यान से देख लो अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ कर दूं तो दिस इज माई सी रीजन and the normal just before it is mg cos theta
minus mv square by r, while over here the normal is mg cos theta plus mv square by r. So here f max will be, and here f max, if I compare both of the f max just before c, and if I compare f max just after c, what do I observe? That f max just before c is less as compared to f max just after c. That is why the reason from b to c is the most dangerous path. Are you able to get me or not? Understood? Is this clear or not? मजा आया? ठीक है, तो हमारे लिए सबसे डेंजरस पाथ कौन सा है? बी टू सी, बी से सी तक है ना? तो उसी पर्टिकुलर बी टू सी में हमें वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फिक्स रखना होगा ना, है कि नहीं? तो मोस्ट डेंजरस पाथ के लिए ही तुम वेलोसिटी की कैलकुलेशन करोगे। ये जो, जब तक तुम डिसाइड नहीं करोगे कि मोस्ट डेंजरस पाथ कौन सा है, तब तक तुम्हें वेलोसिटी की भी वैल्यू सही नहीं मिलेगी। आर एबल टू गेट मी और नॉट? Understood. So that's why I told you acceleration is not important. What is important is the decision of most dangerous path. Understood or not? Clear? मेरी बात समझ में आई? तो ध्यान से देखो, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। तुम्हें मैंने एक चीज बस आज जेई का पढ़ाया, थोड़ा मैंने टफ दिया ही। पहले उसी दिन बोला था मैंने, एक टफ प्रॉब्लम दिया है ना। तो लुक ओवर देयर, बेसिकली फ्रॉम बी टू सी, 1 minute, sorry. लेकिन you understood too many things today, isn't it? Every day you are understanding too many things. Don't say like that. There are too many things only today. Too many things you are understanding each and every day. नहीं तो that's why it's necessary for me to come to Dubai and become a teacher over there, physics teacher. I'll torture every student. So look over here. If this is theta, if this is my cyclist of mass m, this is mg, this angle is theta, mg sin theta, mg cos theta, this is my normal, and there was a particular fixed velocity which is required. If this track is of radius r, then there will be a centrifugal force outside, which is mv square by r. So here the required friction, there is a friction that must be present in opposite direction. To move with constant velocity, the required friction is mg sin theta, while the maximum value of friction is mu into n. And always it must be true that F required must be less than or equal to F max. Then only there will be no slipping. Understood? F required is how much? Mg sin theta. F max is how much? Mu into normal. Mu into normal is how much? Mu into mg cos theta minus mv square by r, na? Are you able to get me or not? So what I got as a relation? Mg sin theta minus mu mg cos theta should be less than or equal to
ओके, माइनस आ गया ना, एक काम करते हैं उल्टा लिखते हैं. If I send mv square by r, what's this side? So mu into mv square by r should be less than or equal to mu mg cos theta minus mg sin theta. Are you able to get me or not? M cancel. V square or V should be less than or equal to root under. I can take G common, G, and this R will go on numerator. So Rg by mu into mu cos theta minus sin theta. This is your relation. That v, that velocity must be less than or equal to root under Rg by mu cos theta minus sin theta. Understood perfectly. मजा आया. I'll check that first, okay? Because you are moving in a curvical path, there are two kinds of acceleration: tangential acceleration and radial acceleration. Which one you have used? I have to check that. मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? So this was all required for the consideration of one question. Next time you should not be मीन्स तुम्हें ये क्लियर माइंड में रहना चाहिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है. आर एबल टू गेट मी और नॉट? और ये ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है. इज दिस क्लियर? ओके, सो tomorrow I'll see. Can I put a class at 4 p.m. tomorrow? Is it possible? हाँ. Means 4 p.m. according to Indian Standard Time. Okay. हाँ. When you are free tomorrow? That would do now. 4 or 4:30. Okay. Means basically 3 p.m. for you. Okay. 3 p.m. should be best now. Okay, then 3 p.m. I'll be taking your class and then I'll finish this circular motion. Okay. Because I'm totally exhausted today. Right now, I don't know how. Okay. So, did you understood this? Okay. So, two more topics left: banking of road and that particular banking of road. Three cases means particular road normal case, then little bit bank, then the banking with the friction. Okay. So three cases are left and then vertical वो जो मौत का कुआं सुना है ना? अरे वो जो डेथ वेल जिसके अंदर गाड़ी लेके वो दौड़ाते हैं वॉल के ऊपर, है ना? हाँ, या फिर मान लो वो तुमने स्पाइडरमैन को देखा है ना दीवार पे चढ़ते हुए? तो इस पर जो स्पाइडरमैन है वो एक ऐसे सिलेंडर के अंदर चढ़ेगा दीवार पे, जो सिलेंडर गोल 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 घूमता है ना? तो इस तरह की केसेस अपन कल कंसिडर करेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 7 प्रॉब्लम्स कल अपन करने वाला है. इज दैट क्लियर? And then I'll be overing this circular motion. Okay. इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से नोट्स बना लेना. जो जो मैंने बका है ना अभी डेढ़ ऑलमोस्ट 1 hour 45 minutes में, पूरा का पूरा एकदम अच्छे से लिख लेना. ओके, इज दैट क्लियर? ओके, देन विल मीट टुमारो. ओके. Yes. Okay, and I'll share you the particular this what we say.